Okay, students. Today we will do. In previous class, we have covered some questions on uh, some applications on circular motion. अब हम आगे बढ़ेंगे उसी से. Okay. Who is Zoom user? You should log in with your name. Okay. Numericals. अब तक जितने हमने पढ़ा है उस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. अगली क्लास में सर्कुलर मोशन एंड होगा. पहला न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं सीबीएसई पीएमटी से. नीट एग्जामिनेशन से हम सबसे पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. A ball of mass 0.25 kg attached to the end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. तो ये जो बॉल है सर्कुलर मोशन कर रही है. The string will break if the tension is more than 25 Newton. If tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed? With which the ball can move? (14 meter per second). First answer. Second answer, 3 meter per second. Third answer, 3.92 meter per second. Fourth answer, that is the D, 5 meter per second. तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स.
ये बॉल है और ये स्ट्रिंग है. The force of tension in string, the force of tension, सिंपल कंसेप्ट है, हम पढ़ चुके हैं. In the string provides centripetal force to the ball. So T equal to mv square upon r, V equal to root of tr by m. अब टेंशन की वैल्यू आप रख सकते हैं 25, रेडियस 1.96, मास 0.25, स्क्वायर रूट निकल आएगा. तो वेलोसिटी 25 का स्क्वायर रूट 5, 1.96 का स्क्वायर रूट 0.14 और 0.25 का स्क्वायर रूट 0.05, 0.5. और इसका जो स्क्वायर रूट है 1.4 होगा, 0.14 नहीं होगा. टेक द स्क्वायर रूट 1.4 एंड दिस विल बी 0.5. तो 0.55 को कैंसिल कर देगा. 10 times 10 into 1.4, the answer is 14 meter per second. The answer is A. You can note it down. So note it down. Then we'll go for second question. Are you done with this? तो बॉल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. तो स्ट्रिंग जब स्ट्रेच होती है, तो उसमें एक फोर्स ऑफ टेंशन डेवलप हो जाता है. दैट फोर्स ऑफ टेंशन प्रोवाइड्स द बॉल necessary centripetal force so that ball is able to move on circular path. Okay, so you are done with this. So questions are simple once you understand the theory. Question number 2. The radius of a circular road is 1000 meter. The maximum, पिछली क्लास में हमने कवर किया था, the maximum safe speed
of a car. The maximum safe speed of a car having mass 2000 kg, 2000 kg will be if the coefficient of friction between tire and road is 0.5. The question has four answers. 172 meter per second is the first answer. Second answer 124 meter per second. Third answer 99 meter per second. Fourth answer 86 meter per second. तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सेफ और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए. It should be equal to root of mu rg. Mu is the coefficient of friction. Here it is given. Here it is given. Here it is given 0.5. Radius of circular path is 1000. Let's take G is 9.8. क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ है तो हम 9.8 ही लेंगे. अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. ओके तो हैव यू डन. तो 0.5 को लिख सकते हैं 5/10. 1000 हो गया 100. ये हो गया 98. This will get cancelled. Now 5 into 98. 5 8 ja 40. 0. 45 490 into 10. So it is 49 into 100. Answer 7 into 10. 70 meter per second आना चाहिए. But we are not having any answer closer to maximum speed is root mu rg. Okay, शायद multiplication करने में. What is r? The radius of road is 1000 meter. The radius of road is 1000 meter. Let's do it. $4,900. The correct answer is 4,900. So let me check the answer. Have you done? Have you got any other answer?
आप आंसर सुधार लीजिए इसका, तो इसका आंसर मार्क कर लेते हैं हम लोग। Okay, so let's move to the next question. Please note it down fast. Okay, so everybody has done. हाँ, जी को 10 ले लेंगे तो आंसर 72 के आसपास आ जाएगा, बट आई हैव टेकन जी एस 9.8. ओके, तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3. साइक्लिस्ट पे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइडिंग द बाइसिकल, राइडिंग द बाइसाइकिल. एक मिनट, साइकिल at a speed of 14√3 meter per second takes a turn around a circular road, around a circular road, around a circular road of radius 20√3 meter. The radius is given 20√3 meter without skidding. Without skidding. Without skidding. Given G equal to 9.8 meter per second square. What is his inclination to the vertical? So again we have got 4 answers. First is 30 degree, second is 90 degree. 90 degree आप जानते हैं possible नहीं है. Third is 45 degree and D is 60 degree. तो इसका अब सॉल्यूशन हम करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए. प्रीवियस क्लास में हमने इसे डिराइव किया था tan थीटा इक्वल टू, प्रीवियस क्लास तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी सर्कुलर मोशन की, v स्क्वायर बाय आर जी. तो वेलोसिटी तो गिवन है 14√3 का स्क्वायर. रेडियस इज गिवन 20√3. g is given 9.8. 196 into 3 and 20 का स्क्वायर 400 into √3 into 9.8. So 3 upon √3 will be √3. अब हम देखिए 1960 तो ये हो गया 498. 0 से 0 कैंसल, तो tan थीटा will be √3 into 196 upon 40.
सॉरी, सो दिस इज 98, तो 14 से हम इसको कैंसिल करेंगे। 14 7 जा 98. Someone has got the answer. हाँ, 400 नहीं होगा। You are absolutely right. 20√3 था ये। ओके, ये सब गलत हो चुका है, अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। It happens while doing the question. Anybody can do the mistake. It's all right. So it is 20√3. So tan theta यहाँ पे solve करते हैं. We have got more space. 196 into 3. 2√3 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 9.8 को 98 कर देगा। अब देखिए 14 से कैंसिल करें, 14 7 जा 98, 14 1 जा 14, 5 कैरी ओवर 56, 14 4 जा 56। अब ये हो गया 14 3 2√3 into 7, 7 into 2 14, 14 cancel, so we'll get 3 upon √3, that is √3. √3 is the value of 60 degree, therefore theta is 60 degree. The answer is D. अब इसका D आंसर आ गया। तो you must know the formula, simple use of formula. ये एक बहुत सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला हमने यूज किया है। वो नोट इट डाउन। आर यू डन विद दिस? तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन पर तो हमने अब बात कर ली, अब एक थ्योरी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है। फोर्स होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। अब दूसरे वर्ड में फोर्स होता है मास इंटू, फोर्स को फोर्स ही रहने दीजिए। अब देखिए दूसरा अप्रोच देखिए, फोर्स वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। क्या होता है, वर्क। तो ये क्या आ गया, अगर हम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है वर्क डन। वर्क अपॉन टाइम का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर
यूनिट टाइम, तो हमेशा याद रखिए। और देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम को। जो मैं आगे थ्योरी बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन पर यूनिट टाइम को आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट वी, दैट इज एफ वी cos theta. Theta is the angle between force and velocity. Theta is the angle between force and velocity. इस बात को थोड़ा याद रखेंगे सब लोग, इसलिए इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द फिजिक्स ये कंसेप्ट यूज होगी, इसलिए आप इसे यहाँ बहुत अच्छे से नोट कर ले, बहुत अच्छे से नोट कर ले। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? सबसे पहले तो ये बताओ, पिछली क्लास मैंने अब तक अपलोड नहीं करी है, आज मैं अपलोड करूंगा। मैं कर सकता था पिछली क्लास को अपलोड, पर मैं चाहता हूँ सब लोग क्लास में आए। टुडे आई विल अपलोड। पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली क्लास में जो डेरिवेशंस हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, अब जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी यू विल एनकाउंटर विद, देखिए ऐसा है, आपने कुछ नहीं यूज किया। हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो हमने यूनिट देख ली। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। और वेलोसिटी को हमने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हैं? वर्क लिख सकते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम। तो जब भी हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। और दूसरी चीज, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट टाइम कैसे निकाला गया है? यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट टाइम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जब दो, फोर्स भी एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, जब दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तब हमें मिलती है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमेशा वेक्टर अप्रोच पे ज्यादा काम करा करिए, इसलिए हमने लिखा है एफ डॉट वी। तो इज इट क्लियर टू यू नाउ? हाँ, वो तो क्यूब होगा, उसकी आप चिंता मत करिए, वो तो यूनिट, पहले मैं इसे यूनिट से बताना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचता हूँ ये तरीका बिल्कुल सही है। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। आपका नेट गड़बड़ है तब ऐसा हो सकता है, हमारी तरफ से नेट अच्छा है। देखिए दो तरह से होते हैं, हम यहाँ एक हमारे एंड का नेट, एक आपके एंड का नेट। हमारे एंड का नेट बहुत स्ट्रांग है। वी आर रनिंग एट 250 Mbps पर सेकेंड। ओके, अब देखिए थ्योरी हम करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। अब देखिए
whenever a body performs uniform circular motion, its velocity is always tangential, and it experiences a force towards the center along the radius, that is centripetal force in uniform circular motion. Okay. In uniform circular motion, velocity acts in tangential direction, and force acts along the radius. So angle between force and velocity is 90 degree. So work is F dot V. So F V cos 90 degree. Cos 90 is 0. That is why the work done is 0. That is the best explanation of this. आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले. If you are done with this, please tell me. The theoretical question, explain why work done in uniform circular motion is 0. तो अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. अभी आपको बताया था कि फोर्स और वेलोसिटी में जो का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, वर्क देता है. तो वर्क डन पर यूनिट को वेक्टर मेथड से एफ डॉट वी से निकालते हैं, और वर्क डन को एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम वेक्टर में इन सब चीजों को कर सकते हैं, कर चुके हैं. सो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट. यही इसका एक बेस्ट तरीका होता है इसको एक्सप्लेन करने का. अब एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो हम करेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Okay, so I am moving to the next slide. Next question.
while kinetic energy in uniform circular motion is always constant। हालांकि हम इसे वर्क पावर एनर्जी में पढ़ सकते थे, लेकिन हमें इसका आंसर तो हमें यही देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, वर्क डन का एक कंसेप्ट याद रखिए जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी आप इसे एक्सेप्ट करिए इस लेवल पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। But in uniform circular motion, but in uniform circular motion, work done is zero. Therefore, change in kinetic energy is zero. Hence, kinetic energy remains constant, remains constant। तो ये अप्रोच होती है, क्योंकि चेंज जीरो हुआ मतलब नहीं बदला, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब चेंज वो सेम रहा। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देना चाहिए। So please note it down. These are the some very important conceptual question which used to come in the examination. So are you done with this? Read your books. अभी सभी लोग बारी बारी से बताओ कि कौन कौन सी बुक यूज कर रहे हैं। You should use प्रदीप। एक आपका रिफ्रेशर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स यूज कर सकते हैं, एनी रिफ्रेशर विल डू। सो यू आर डन विद दिस। तो अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, कोई सा भी बुक हो, Nowboth, Yugboth, any book will do, but I read the book. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। अब देखिए, मिनट हैंड आप समझते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे मिनट हैंड ऑफ वॉच
completes one revolution in 60 minutes. So 60 minutes will be equal to 60 into 60, 3600 seconds. So time period of minute hand 3600 seconds. Now we will use omega is 2 pi by t. So it is 2 pi by 3600. So pi by 1800 radian per second. This is very important. इसी तरह आप सेकंड हैंड की भी एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेकंड हैंड ऑफ वॉच होता है, वो क्या करता है, 60 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। कभी भी आपको एंगुलर स्पीड निकालनी हो, तो हमेशा आप याद रखिए, टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरा ओमेगा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी। और उस तरह से आप आवर हैंड के भी एंगुलर स्पीड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चीजें आप करके हमेशा देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है, इसको करना इजीली, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आप चाहे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ ए वॉच। तो ये भी आप कर सकते हैं। सेकंड हैंड्स का टाइम पीरियड होता है 60 सेकंड, तो एंगुलर स्पीड होगी 2 पाई बाय 60 पाई बाय 30 रेडियन। इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, रेडियन पर सेकंड। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आसानी से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम, और लीनियर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। We can calculate the linear velocity also. Okay, next question। अब कुछ थोड़े सिंपल क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए। A string breaks
breaks. If its tension exceeds, if its tension exceeds 10 Newton, 10 Newton. If its tension exceeds 10 Newton. If its tension exceeds 10 Newton. A stone of mass, a stone of mass 250 gram is tied to one end of string, सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था, and rotated in horizontal circle of radius 10 centimeter, the maximum angular velocity of rotation can be अब ये इसके आंसर है 20 रेडियन पर सेकंड, पहला आंसर। दूसरा आंसर है 40 रेडियन पर सेकंड, 40 रेडियन पर सेकंड तीसरा आंसर है, और इसका तीसरा आंसर है 100 रेडियन पर सेकंड। अब आपको कैलकुलेट करना है, पहले आपका चांस है, और चौथा आंसर है आपका 200 रेडियन पर सेकंड। 200 सिंपल क्वेश्चन है, 200 रेडियन पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा मौका दें सॉल्व करने का, तो फिर आगे हम लोग करेंगे। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि जो टेंशन है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब टेंशन को आप लिख सकते हैं, mv² अपॉन r। और आपको याद हो मैंने आपको बताया था डिराइव करके v इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमने यहाँ पे v को लिख दिया r ओमेगा, तो ये हो गया r² ओमेगा² अपॉन r। अब r² को r कैंसिल करेगा तो ये हो गया m ओमेगा² r। तो अब देखिए, अब मास हम निकाल लेंगे 250 ग्राम। 250 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से आप क्या करिए डिवाइड करिए। उसके बाद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पूछ ही गई है। एक्चुअली अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो देखिए, ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ से लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर को, ये देखिए इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं हम। ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टेंशन डिवाइडेड बाय एम आर। सो ओमेगा विल बी रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम आर, रूट ऑफ टी। अब रूट में टेंशन की वैल्यू कितनी है, 10 है, मास है 250 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.25 केजी आ जाएगा। और रेडियस नहीं दी शायद, टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा,
10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आप इसमें बदल दो मीटर में। तो हमेशा आप याद रखिए मास होगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.25। इसको अगली स्टेप में ले जाएंगे, और रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उसको हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये मीटर में बदल गया, और ये किस में बदल गया, केजी में। अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आता है, फिर आगे देखते हैं। Any one of you, please calculate. No one is able to calculate. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा विल बी, जीरो बढ़ जाएंगे 0.25 से और एक 0.1 से, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स। सो ओमेगा विल बी रूट ऑफ 400, ओमेगा विल बी 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड, तो ये आपका इसका आंसर आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस, सिंपल क्वेश्चन है, ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, 0.4 मीटर completes one revolution, completes one revolution in 1 second, completes one revolution in 1 second. Then the acceleration, then the acceleration of a point on the cycle wheel will be, the answers are given, meter per second square. Second answer 0.4 meter per second square. Third answer 1.6 pi square meter per second square per second square. Fourth answer 0.4 pi square meter per second square. तो अब हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, then we will solve this question.
तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमसे पूछा गया है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, और हम जानते हैं वो होता है v²/r, पर v होता है r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सो इट विल बिकम r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होगा 2π/t होल स्क्वायर, so it will become r 4π square by t square. So centripetal acceleration will be equal to 4π square r t square. अब देखिए completes 1 revolution in 1 second, तो टाइम पीरियड तो गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड, और रेडियस भी गिवन है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, तो ठीक है 4π square, रेडियस इज गिवन 0.4 और टाइम पीरियड इज 1 square, so it is 1.6 pi square. So the answer is अब आपका आंसर आ गया है सी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। You should try to solve the numericals as much as it is possible. You need to solve it. Okay, are you done with this? इसको नोट कर लिया? देखिए अगली जो सर्कुलर मोशन की जो क्लास है उसमें एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा, मोशन इन वन वर्टिकल सर्कल, जैसे वो मौत का कुआं और सर्कस में देखते हैं ना आप, उसको हम स्टडी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हमारा सर्कुलर मोशन को वहां हम एंड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई एम होपफुल कि अब आपको ये समझ में आ गया। कितने लोगों ने इसे नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? प्लीज टेल मी। ओके, तो अच्छी बात है। तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो आप उसको सॉल्व करिए। ओके, तो इसको एंड कर रहे हैं यहाँ पर। अगली क्लास बहुत जोरदार होगी। अगली क्लास में जो हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे हैं, हाँ टेस्ट होगा, आपको ऐप के थ्रू ही नोटिफिकेशन मिलेगा। आप जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, अब ये जो जूम है वो ऐप के थ्रू ही इंटीग्रेट होगा। वी हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स। तो अगली क्लास के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हर साल पूछा जाता है। टेक केयर, स्टे सेफ।